Hello friends, welcome back to Acharya Ganesh once again. And today's video I'll be sharing with you the impact of Rinn related to Ketu and how to identify it in your horoscope. और लाल किताब में इसे हम कहते हैं कुदरती ऋण. So जब प्लैनेट केतु से रिलेटेड ऋण होता है और जो ये कुदरती ऋण होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स में either you have Mars or Moon placed in the 6th house of your horoscope. So this is the planetary that positions that you need to check for the symptoms. और इसका reason क्या है? Why you are born with this? Because in the past life you must have admitted a sin by killing dogs or you've harmed dogs. और आपने जब किसी के बेटे को या dogs को harm किया होगा तब ये ऋण लगता है हमारी लाइफ में. And how does it manifest in life? उसके symptoms क्या होंगे? So जिनकी भी लाइफ में ये कर्स मैनिफेस्ट हो रहा होता है उस केस में हमें क्या चेक करना है? जो सिम्टम्स होते हैं इनके किसी भी मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि जो मेल चाइल्ड होता है that dies quite early in age, and even if the male child doesn't die early, when he grows up he is actually diseased, he is not healthy enough to enjoy life. और बेसिकली ये पूरे जो ब्लड रिलेटिव्स है सब में देखा जाएगा कि उनके वहाँ पे दे डू नॉट हैव मेल चाइल्ड. मोस्टली कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी ब्लड रिलेटिव के घर में एक मेल चाइल्ड नहीं है, और अगर है भी तो दैट मेल चाइल्ड इज सिक. एंड द नेटिव हिमसेल्फ, जिसकी कुंडली में ये कर्स होगा, दैट नेटिव विल हैव सीवियर बैक इश्यूज, आपके स्पाइन रिलेटेड इश्यूज होंगे, और आप अपने मेल चाइल्ड से खुश नहीं होंगे या फिर मेल चाइल्ड सर्वाइव नहीं कर रहे होंगे. So these are the symptoms that you need to check when you have this curse, and then you need to understand that it's a curse that's manifesting in your life. And because 6th house also represents maternal side of the family, so the maternal side of the family of this native, whoever has this combination and these symptoms in the chart and happening in life, उनकी maternal side of the family भी struggle करती है. उनकी भी life में बहुत सारे problems, बहुत सारे diseases और issues related to male child देखने को मिलते हैं ऐसे cases में. तो इसकी हम remedy क्या करेंगे? So केतु से related remedy जो best remedy होती है, because dog भी represent करते, astrology में dog is represented by planet Ketu. So what you need to do is collect money from all the blood relatives and feed 100 dogs in one single day. And आप अगर street dogs को खिलाएंगे 100 street dogs को तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना आप किसी dog shelter में भी जाके ये remedy कर सकते हैं. And performing this remedy will actually help you to enjoy your life in a better way. You will see how the curse will actually pacify, and you will overcome the obstacles related to it. आपके health related issues सही हो सकते हैं, आपके back में जो issues चल रहे होते हैं. I'm not saying it will completely go away, but you will feel some relief after performing this remedy. And as I've been mentioning in every single video, just to make sure in case you have missed the last video and you haven't watched it, if any of the blood relative is not able to donate, you should donate on their behalf. You should contribute on their behalf 10 times more than what you are actually, doing. So for example, everybody is donating 10 rupees per person. तो आपको क्या करना है, 100 दीजिए आप अपनी तरफ से उस रिलेटिव के नाम के. And this is how you will go and perform this remedy. And that's all from me for the series of how to identify curses. और ये remedies जब आप perform करते हैं during Shraddh, during this Pitra Paksha, these are really beneficial. And that's all from me. Thank you very much.